अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अली नेशनल एकेडमी पीसीआर की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई नेबोश IG1 और GIC1 एग्ज़ाम के क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में। अगर आपने जुलाई का पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात क्लियर कर लेते हैं। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, क्लोजिंग इंटरव्यू का सिर्फ एक ही मकसद होता है, ये चेक करना कि जो पेपर आपने नेबोश को जमा करवाया है, क्या वो वाकई आपने खुद हल किया है या नहीं। इसके अलावा क्लोजिंग इंटरव्यू के कोई अलग मार्क्स नहीं होते। जी हाँ, इस इंटरव्यू में आपको पास या फेल करने के लिए अलग से मार्क्स नहीं दिए जाते। इसलिए अगर आपने अपना पेपर खुद हल किया है और आप अपने लिखे हुए जवाबात को समझते हैं, तो फिर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्लोजिंग इंटरव्यू हमेशा आपका लर्निंग पार्टनर ही लेता है और ये आम तौर पर वीडियो कॉल के ज़रिए होता है। इंटरव्यू के शुरू में सबसे पहले आपकी शनाख्त वेरीफाई की जाती है। आपसे आपका पूरा नाम पूछा जाता है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म की जाती है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सही उम्मीदवार का ही इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसके बाद इंटरव्यू लेने वाला आपसे कहता है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के कैमरे से अपना पूरा कमरा दिखाएं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये देखा जा सके कि आपके पास कोई दूसरा शख्स मौजूद तो नहीं और ना ही कोई बुक, नोट्स या स्टडी मटेरियल खुला हुआ है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब ये इब्तिदाई प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तब असल क्लोजिंग इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू लेने वाला आपकी अपनी आंसर शीट में से 3 रैंडम सवालात पूछता है। याद रखें, ये सवालात किसी भी टास्क या किसी भी आंसर से हो सकते हैं। आपने सिर्फ वही जवाब एक्सप्लेन करना होता है जो आपने अपनी आंसर शीट में खुद लिखा था। यानी आपके तमाम जवाबात आपकी अपनी सबमिटेड आंसर शीट पर ही मुनहसिर होते हैं। अगर आपने पेपर खुद हल किया है, तो इन सवालात के जवाब देना आम तौर पर मुश्किल नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंटरव्यूअर किस किस्म के सवालात पूछ सकता है और आपको इनके जवाब किस अंदाज में देने चाहिए। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के सवालात आ सकते हैं और उनके बेहतरीन जवाब कैसे दिए जा सकते हैं। Hello, Mr. Daniel. My name is Ahmed and I'm calling from National Academy PCR. This closing interview will be recorded for audit purposes. Do we have your permission to record this interview? Yes, sir. Sure. You have my permission to record this interview. Thank you. First of all, could you please tell me your full name? Yes, sir. My name is Danyal Shahid. Thank you, Mr. Daniel Shahid. Could you please tell me your learner number? Yes, sir. My learner number is 0105689. Thank you. Can you please confirm your date of birth? Yes, sir. My date of birth is 15 January 1998. Thank you for confirming your details. Now, could you please use your back camera to show me your room in a 360-degree view? Sir, please have a look. This is my room. Thank you, Mr. Daniel. Everything looks fine. Now, let's move on to your assessment. I'm going to ask you a few questions based on the answers you submitted in your paper. Are you ready? Yes, sir. I'm ready. All right, Mr. Daniel. So, my first question is from task number 1. For task 1, you were asked how tins and cans could benefit from a formal health and safety management system. 2 of the answers you gave were definition of roles and responsibilities. You wrote that the factory manager post has been vacant for 8 months and the existing directors are unsure who is responsible for health and safety. Integration will provide a clear organizational structure, identifying exactly who is accountable for what. And the second point you wrote was up-to-date health and safety policy. You explained that the current policy is 3 years old and does not match the current organizational structure. A formal safety management system ensures the policy is a live document that is reviewed regularly to stay relevant to current operations. Can you please explain why did you choose these 2 answers? Yes, sir. I selected the first point, definition of roles and responsibilities,
because it was directly supported by the scenario. The scenario clearly mentioned that the factory manager position had been vacant for the last 8 months. Because of this, the directors were not sure who was responsible for health and safety. A formal health and safety management system clearly defines the roles and responsibilities of everyone in the organization. This helps each manager, supervisor, and worker understand exactly what they are responsible for, improves accountability, and reduces confusion. The second point I selected was up to date health and safety policy. I chose this because the scenario stated that the health and safety policy was 3 years old and did not reflect the current organizational structure. A formal health and safety management system requires the policy to be reviewed and updated regularly. This makes sure that the policy always reflects the current management structure, workplace activities, and health and safety risks. So, sir, I selected these two answers because they were clearly linked to the scenario and they are important benefits of implementing a formal health and safety management system. That's good, Mr. Daniel. Now my next question is from Task 2, Part A. For Task 2, Part A, you needed to comment on whether the health and safety audit of the factory was conducted well. In your paper, two of the answers you gave were independent perspective. You explained that the audit was carried out by an independent health and safety consultant, which provides an objective view and a fresh pair of eyes. And the second point was sufficient duration. You wrote that allocating 5 days for auditing a factory with around 50 permanent and up to 50 temporary workers was a reasonable time frame for a thorough audit. So my question is, why did you think these were suitable answers? Yes, sir. I selected independent perspective because an external health and safety consultant is more objective and unbiased than someone working inside the company. This helps identify hazards and weaknesses that internal staff may overlook. I also selected sufficient duration because a 5-day audit provides enough time to review documents, inspect the workplace, and interview workers properly. This makes the audit more detailed and reliable. So, sir, I believe these were suitable answers because both points show that the audit was planned and carried out effectively. Okay, that's great, Mr. Daniel. Now, my next question is from task number 3. For task 3, you needed to consider the general hierarchy of control when commenting on how to minimize the risk of injury when machine blockages occur. In your paper, you wrote these two control measures. Automated clearing. You recommended installing a robotic or mechanical arm to clear machine blockages automatically so workers would not need to place their hands inside the danger zone. The second point was process change. You suggested using an alternative joining method such as cold seaming or adhesives instead of high heat welding to eliminate the risk of burns and electric shock. So, my question is, which one would you prioritize and why? Yes, sir. I would prioritize process change because it follows the hierarchy of control more effectively. If the welding process is replaced with a safer method, the hazard is eliminated at its source. Although automated clearing is also an effective control, it mainly reduces workers' exposure to the hazard. Therefore, I would give higher priority to process change because eliminating the hazard is always more effective than controlling it. तो स्टूडेंट्स इसी तरह टास्क नंबर 4 और टास्क नंबर 5 में से भी आपसे क्लोजिंग इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जा सकते हैं। याद रखें, क्लोजिंग इंटरव्यू में आपसे सिर्फ 3 सवालात पूछे जाते हैं और ये तीनों सवाल आपके पेपर के किसी भी मुताल्लिका टास्क में से हो सकते हैं। अब एक अच्छी खबर भी सुन लीजिए, टास्क नंबर 2 पार्ट बी में से क्लोजिंग इंटरव्यू में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। इसी तरह टास्क नंबर 6 और टास्क नंबर 7 में से भी क्लोजिंग इंटरव्यू में कोई सवाल नहीं आता। इसलिए आपको अपनी तैयारी ज़्यादातर टास्क 1, टास्क 2 पार्ट ए, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5 पर फोकस करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि क्लोजिंग इंटरव्यू किस तरह होता है और इंटरव्यूअर किस किस्म के सवालात पूछ सकता है। मेरा मशवरा यही होगा
कि क्लोजिंग इंटरव्यू देने से पहले पूरा सिनारियो एक मर्तबा दोबारा अच्छी तरह पढ़ लें और अपनी आंसर शीट को भी अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अगर आपने अपना पेपर खुद हल किया है और आपको अपने लिखे हुए जवाबात की समझ है तो इंशाअल्लाह आपका क्लोजिंग इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे तलबा भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।